सर जैसे कि आप जानते हैं इतिहास में कई बुरे वक्त आए हैं हाँ और आज भी आते ही हैं कभी ना कभी। हाँ तो आज की जो हमारे वीडियो का टाइटल है हाँ वो कह रहा है कि हर सदी का सबसे खराब साल जो था, जो बर्बादी लेके आया या तबाही लेके आया या बहुत बुरा साल था हर सदी का, उसके बारे में यहाँ जानकारी दी जा रही है और उस घटना के बारे में भी बताया जाएगा कि उस साल में उस सदी में क्या हुआ था। तो मैं चाहता हूँ आप दोनों इसे देखें, समझें और इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। साहब ये जो आप ये ऐसी बात करते हो ना कि वो घटना नहीं है वो क्या सब सुनकर दिल रोता है। लेकिन हाँ एक बात तो है कि अगर पुष्कर की तरफ से वो चीज़ अगर इंसानों पे आ रही है तो कहीं ना कहीं मैं भी ये मानता हूँ कि पुष्कर जब भी करती ना उसमें कहीं ना कहीं नुकसान अगर हो तो कहीं ना कहीं फायदा भी उसमें दी जाता है। अब ये कौन सी घटना है, कौन से साल की, अब ये क्या प्रोफेसर है, वो तो सब देखने को बात मालूम है क्या है क्या नहीं। ये तो सदी चल लिया है, ये 2026 चल लिया और इसका सबसे बुरा रहा होगा तो मैं समझता हूँ कोरोना ही रहा होगा सबसे बुरा वक्त। वो लोगों ने कैसे काटे, क्या करे क्या नहीं करे तो भगवान ही जानता या फिर इंसान जानता। इंसान भगवान नहीं जानता, इंसान भी पूरी जानता। भगवान हाँ, ने कोरोना दिया और उस बुरे वक्त में अपन भुगते मुखी घर से बाहर नहीं निकले, किसी को चाय तक नसीब नहीं, किसी को खाने तक नहीं मिला। एक जैसा दिन का अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो ये होप एक डर एक परेशानी, तो ये अपन अपने आंखों देखी घटना को मालूम। अब उस वक्त में क्या है क्या हुआ है वो अपने ये तो वो तो देखने पे ही पता चलेगा, मगर सुनने के बाद दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। हाँ तो सर लगाई जाए फिर। First century, in 79 AD, Mount Vesuvius, a major volcano in southern Italy, erupted with catastrophic force, wiping out the Roman cities Pompeii and Herculaneum. A towering 33 kilometers plume of ash and gas rained down molten rock and pumice at 1.5 million tons per second, unleashing 100,000 times the energy of the Hiroshima and Nagasaki bombings. Thousands were buried alive as pyroclastic surges engulfed the cities. Second century. In 165 AD, the Antonine plague swept through the Roman Empire, killing 5 to 10 million people. Likely smallpox or measles, it spread through soldiers returning from war with the Parthian Empire in the east, devastating cities and the Roman army. The outbreak crippled trade with India and Southeast Asia, leading to economic decline and social unrest. On top of that, the war itself caused mass displacement and further economic strain for both empires. Third century. In 251 AD, the plague of Cyprian ravaged the Roman Empire, killing up to 5,000 people per day in Rome and slashing Alexandria's population, which was part of the Roman Empire at that time, from 500,000 to 190,000. Likely caused by smallpox, measles or hemorrhagic fever, the disease devastated food production and the military, worsening the crisis of the 3rd century. बीमारियों ने बहुत आतंक मचाया पुराने जमाने। A period of invasions, civil wars and economic collapse in the Roman Empire. In response, Emperor Decius ordered mass sacrifices to the Roman gods, leading to the persecution of Christians who refused to comply. 4th century. In July 365 AD, a massive earthquake near Crete struck the eastern Mediterranean, triggering a tsunami that wiped out coastal cities. Alexandria, one of the largest cities in the world, was devastated, with tens of thousands dead in a single day. The tsunami swept inland for miles, destroying towns, sinking ships, and leaving survivors stranded without food or clean water.
और लो लोग ऐसे में क्या करा हुआ लोगों ने तो ये देख के हैरान हो रहे हो यार बताओ हैं हाँ यार। कैसे जिंदगी गुजारी होगी उन्होंने यार जो बचे सुनानी का नाम मैंने तो अभी अभी सुना था मगर वो पुराने जमाने में भी आती है ये तो आज पता चला हाँ यार बताओ Countless settlements were wiped off the map. Beyond the tsunami, the Huns were beginning their violent migrations across Central Asia, setting off a chain reaction of destruction that would eventually crush Europe's civilizations within a century. The Huns' arrival in Eastern Europe pushed other tribes, like the Goths, into Roman territories, contributing to the empire's destabilization. कुदरत तो परेशान कर रही है मगर वो आदमी भी आग मुँह तरी है देख लो ये सेना पर करिए वो Another mention for this century has to be the Battle of Adrianople in 378 AD. This was a turning point for the fall of Rome, where the Goths defeated tens of thousands of Roman soldiers, including Emperor Valens. 5th century. In 410 AD, Rome was sacked by the Visigoths under King Alaric. This event marked the first time in 800 years that Rome had fallen to a foreign enemy and symbolized the beginning of the end for the Western Roman Empire. अब ये जो कहानी है नहीं अब ये जंग है युद्ध पे चलेगी अभी तो गुजरती मारती अब ये मार शुरू हो गई क्या करे आदमी यार The sack led to mass deaths, the looting of Rome's treasures, and widespread chaos throughout the empire. The shock was profound, signaling to the world that the Roman Empire was no longer the invulnerable power it once was. वो साम्राज्य जो है वो भी कमजोर हो गया अब बताओ क्या करे अभी Another mention in this century has to be Attila the Hun's invasion of Gaul in 451 AD, which led to massive devastation across Europe. 6th century, often called the worst year to be alive, 536 AD easily takes the trophy here. This year kicked off a global disaster of biblical proportions. A series of volcanic eruptions blanketed the earth in a thick cloud of ash, causing a volcanic winter. The sun was blocked for 18 months. लो भैया लो अरे हाँ 18 महीने वो भी सूरज में 18 में तो सूरज दिखाई नहीं यार बताओ आप ओहो इससे बड़ी घटना उनका भैया यार सूरज ढक गया तो पूरी दुनिया में सर्दी फैल गई leading to freezing temperatures, crop failures, and widespread famine. People faced droughts, snow in summer, and economic collapse. The year 536 set the stage for an even darker period, including the plague of Justinian, which would go on to kill a third of the population of the Byzantine Empire. लो भैया लो ये क्या है इसका खबर बहुत ही बड़ी बात 7th century. In 664 AD, the Yellow Plague hit Britain and Ireland with devastating effect, wiping out entire monasteries that were the heart of social and religious life at that time. While the death toll may have been smaller compared to other pandemics, the disruption was massive and the ripple effects were felt for generations. Another worthy mention of this century is the death of Muhammad in 632 AD, which triggered a power vacuum in the Arabian Peninsula. This led to the Ridda Wars, a series of violent revolts and internal conflicts within the Muslim community. ऐसी कैसी बीमारी थी जो उसका असर पीढ़ियों तक चलता रहा? हाँ, मैं भी ये सब बोला अच्छा होटल पे कहीं इतना इलाज भी नहीं था नहीं यार तो अब वो जो बीमारी चला मैं बोला तो मेरे हाँ तो वो तो फैलती गई वो बहुत बुरा हुआ अच्छा फिर क्या जो इंसानों की जो लड़ाई वो भी नहीं वो मार काट वो फिर वो शुरू एक जो गुजरती मार ये बाप रे बाप 8th century. In 750 AD, the Abbasid revolution erupted, marking a brutal turning point in Islamic history. The Abbasids overthrew the Umayyad Caliphate in a violent series of events, including the Battle of the Zab. This battle led to the Umayyads' dramatic fall and was followed by a bloody purge, with nearly every member of the ruling family executed. What followed was widespread civil war and chaos across the Islamic world. 9th century. चाचा जितनी तबाही कुदरत मचा रही है उतनी तबाही इंसान भी मचा रही है तो फिर बचा क्या? In 865 AD, the Great Heathen Army, a massive coalition of Viking warriors, stormed England with one goal: total conquest.
Unlike earlier Viking raids that focused on quick plundering, this invasion was a full-scale occupation, targeting the Anglo-Saxon kingdoms of East Anglia, Northumbria, Mercia and Wessex. Led by the infamous sons of Ragnar Lodbrok, including Ivar the Boneless, Halfdan Ragnarsson and Ubbe, the Viking force was among the largest of its kind, launching a brutal 14-year campaign that shattered England's stability. Monasteries were looted, towns and villages were burned to the ground, and entire kingdoms collapsed under the relentless assault. The loss of life was staggering, and the English were thrown into chaos as their lands fell to the invaders. 10th century. In 907 AD, the once mighty Tang dynasty collapsed, throwing China into chaos. The empire, which had been one of the most powerful civilizations in the world, fractured into competing warlord states, marking the beginning of the 5 dynasties and 10 kingdoms period. With no central authority, warlords fought for dominance, and the central plain became a battlefield drenched in blood. Cities were sacked, alliances were made and broken, and millions died from massacres, starvation, and relentless warfare. Widespread famine and economic collapse followed as trade routes were disrupted and farmland was constantly pillaged. By warring factions. Meanwhile, in the Islamic world, the Abbasid Caliphate was deep in decline, with power shifts leading to localized conflicts. In Europe, the Vikings were still actively raiding, with ongoing warfare in England, Ireland and France contributing to widespread suffering and instability. 11th century. In 1099 AD, the First Crusade reached its bloody climax as Christian knights laid siege to Jerusalem, reaching its walls after weeks of starvation and bombardment. चाचा अब इंसान धर्म के पीछे लड़ने चालू हो चुका है, देख लो। कोई सा भी धर्म ये नहीं सोच सकता कि आप लड़ो, तो ये धर्म ये सोच सकता कि आप नहीं करो। What followed was one of the most infamous massacres of the medieval era. Tens of thousands of Muslims and Jews were slaughtered. The Al-Aqsa Mosque was turned into a royal palace, and the Dome of the Rock transformed into a Christian shrine. This incident fueled ongoing religious warfare between the Christian and Muslim worlds for centuries. On top of that came widespread famine and disease in some parts of Europe due to poor harvests and ongoing warfare. Meanwhile, the Byzantine Empire was dealing with the Passionist invasions. Christian kingdoms in the north of Spain were fighting against Muslims, and the aftermath of the Norman conquest still lingered with resistance against Norman rule. देखा है चाचा, धर्म के पीछे कितने बड़े-बड़े युद्ध हो गए और कितनी जानें गई। 12th century. In 1177 AD, the Battle of Montgisard marked a significant victory for the Crusader kingdoms. Led by the 16-year-old Baldwin IV, the Crusaders defeated Saladin's army in a battle that had heavy casualties on both sides. But the battle did little to halt the ongoing strife in the Holy Land, and the conflict between the Crusaders and Muslim forces raged on. Meanwhile, the same year, the mighty Angkor Empire saw the beginning of its collapse as it faced internal strife and external attacks, notably from the Cham Empire. तो युद्ध और राजनीति यही चल रही है बस। This marked a period of instability that would continue for decades. Another mention in this century has to be the 1138 Aleppo earthquake in northern Syria, with estimates of over 200,000 deaths. Its disruption of key trade routes shifted trade from land to sea, boosting the rise of Italian city-states like Venice. ये जो भूकंप है, ये तो कुदरती चीज है, इसको तो अपन रोक नहीं सकते। ये जो आदमी लड़ रहा है, इनको तो अपन रोक सकते हैं। हाँ, ये भी सही। 13th century, the siege of Baghdad in 1258 AD by the Mongol Empire resulted in the destruction of the city and the massacre of hundreds of thousands of inhabitants.
This event marked the end of the Islamic Golden Age and led to a significant cultural and scientific decline in the region. This devastating event coincided with the aftermath of the 1257 eruption of Mount Samalas in Indonesia. The eruption, which released massive amounts of sulfur dioxide into the atmosphere, caused global cooling. यार इंसान तो कहेगा तुम सबाई मजा जाओ मुझे नहीं आया लेकिन उन हालों को तक तो कुदरत भी बोलेगा भैया मैं भी खुश हूँ मैं पीछे हूँ By 1258, the world was already feeling the effects, with harsh winters, crop failures, and famines spreading across the globe. आपको कैसे पता? अरे बस ये इतिहास देखते आ रहे सुनते आ रहे सुनते रहे 14th century. In 1347 AD, the world faced one of the darkest chapters in human history, the arrival of the Black Death. This devastating pandemic was caused by the bacterium Yersinia pestis, spread through fleas and airborne droplets. It killed an estimated 1/3 of Europe's population, wiping out around 200 million people globally. छोटे-छोटे जानवर जो पशु इतनी बीमारी फैला रहे हैं, इतने लोगों को मार रहे हैं, बताओ. It's believed to have first been introduced to Europe during the siege of the Genoese trading port of Kaffa in Crimea, when the Golden Horde army launched an assault on the city, which brought the plague with them. From there, it spread rapidly through the Mediterranean, carried by fleas on black rats that traveled aboard Genoese ships, making its way through North Africa, West Asia, and eventually the rest of Europe. इस बीमारी को चूहों ने फैलाने में बहुत मदद की. Many saw the plague as divine retribution, leading to widespread panic. This was the second major disaster to strike Europe in the late Middle Ages, following the Great Famine of 1315. वो तो लगभग पूरी दुनिया में ही फैल गई होगी. आपकी बात सही है लेकिन उसका ज्यादा प्रकोप जो नहीं यूरोप में दिखाई दिया था. अच्छा. The famine, triggered by a series of crop failures, led to widespread death and crime. By the time the Black Death arrived, Europe was already weakened. 15th century. जो अपराधी रहते हैं ना, वो किसी भी हालत में फायदा उठाने से पीछे नहीं हटते. उनको तो मौके का फायदा इतनी जल्दी उठाते हैं. मौका मिला कि ये काम दिखाया उन्होंने. The year 1453 marked one of the darkest moments in this century, the fall of Constantinople. When the Ottoman Turks captured the city, it brought an end to the Byzantine Empire, a once thriving center of culture and power that had endured for over a millennium. Tens of thousands of defenders and civilians were either massacred or enslaved. This event also triggered a massive refugee crisis as thousands fled the city, scattering across Europe, adding further strain to the continent's political and social fabric. देखो चाचा, अभी भी राजनीति और धर्म बराबर अभी भी चली रही है. वही 15वीं सदी में. हाँ. अब ये तो देखो अपने को अभी लगता है कि 8वीं 9वीं सदी से हम धर्म की शुरुआत 15वीं सदी चली 600-700 साल हो गए या धर्म की लड़ाई. The fall also obliterated key trade routes, which would have lasting economic repercussions. The Ottomans also tried to capture Belgrade in that same year. The siege, although unsuccessful, resulted in even more casualties and destruction. 16th century. In 1520, smallpox was introduced to the Americas by European explorers, resulting in one of the most devastating epidemics ever. यार भैया मैंने बड़े बड़े मुगल से पहले चेचक का जो इलाज था नहीं बाद में वो टीका लगाया और इसको कम करा. In some areas, mortality rates soared to 90%, leaving entire communities decimated. क्या बताएं 90% किसे कहते हैं भैया यार. बताओ, वो तो पूरी आबादी साफ हो गई, बचा गया 100 में से 10 लोग ही बचे खाली. The disease ravaged various indigenous groups across the Americas, decimating native populations in regions like the Andes and North America,
America, leading to death tolls in the millions. This pandemic was particularly devastating for the Aztec Empire. The disease spread rapidly, killing countless people, including many warriors and leaders who would have been essential for resisting the Spanish conquest. In just a year, the mighty Aztec civilization was brought to its knees by a combination of smallpox and Spanish military forces. मजबूत साम्राज्य एक साल में ध्वस्त हो गया. बताओ. 17th century. In 1644, the Ming dynasty crumbled under the weight of internal rebellion and external invasion. The chaos began with a peasant uprising in Beijing. But before the rebels could secure their rule, the Manchu-led Qing dynasty swept in, seizing control and establishing a new imperial order. During the transition, China was engulfed in brutal warfare, leaving millions dead. To make matters worse, this all happened during the peak of the Little Ice Age, a period of global cooling that led to crop failures and widespread famine. मैंने एक बात तो देखी भैया, कितना भी मजबूत राज्य हो, साम्राज्य हो, अगर पब्लिक ने उसका एक दफे विरोध कर दिया, तो उसको उठाने के अंदर सेकंड ही नहीं लगेंगे. ये तो भले वो बसों से कर रही हो, लेकिन ये दोनों टूट. बर्फीला युग अलग आ गया. The combination of war, starvation, and disease resulted in an estimated 25 million deaths, making it one of the deadliest upheavals in Chinese history. The 1601 Russian famine, caused by the eruption of a volcano in Peru, killing around 2 million people, also deserves a mention for this century. इसी तरह गुजरात में टाइम पे अपना खर्चा दे देगा जो आबादी को कम होती है. 18th century. In 1783, disaster struck both India and Europe in a year of unimaginable suffering. The Chalisa famine, triggered by a severe El Niño event, led to relentless droughts across the Indian subcontinent. Crops withered, rivers ran dry, and starvation spread like wildfire. This catastrophe followed another devastating famine in South India the year before, compounding the crisis. In total, as many as 11 million people perished. 11 करोड़ लोग मर गए अकाल से, और वो भारत में भी आ गई. अपनों को तो पहले मालूम ही नहीं था कि ये भारत में हुआ. Meanwhile, Iceland's Laki volcano erupted, spewing toxic gases into the atmosphere. The fallout poisoned crops across Europe, triggering widespread famine and disease. यार ये ज्वाला वगैरह भी बहुत तबाही मची है यार. मौका पर साला फटता रहता है वो इंसानों को. वो फटने के बाद तबाही कितनी मचती है और हर चीज pollution अलग हो जाता. On Iceland itself, half of the livestock died and a quarter of the population perished from famine and fluorine poisoning. The toxic haze drifted across Britain and France, killing thousands from respiratory disease. The eruption also disrupted monsoons in Africa and India, worsening global food shortages. जब ऐसा तो ये था कि बच्चे कितने दूर फटी, लेकिन उसका असर 1755 AD also has to be mentioned for this century. The Lisbon earthquake killed up to 100,000 people, leveling Portugal's capital with tremors, tsunamis, and fires. Meanwhile, in Central Asia, the Qing dynasty wiped out up to 400,000 of the Jungar Mongols through mass slaughter, famine, and forced migration. 19th century. In 1816, the world experienced what became known as the Year Without a Summer, a time of freezing weather that turned entire regions into wastelands of failed crops and starving populations. मतलब हर जगह मौत ही मौत है. बहुत अच्छा वो कुदरत करे जब वो इंसान करे. तो क्या करेगा बेटा? और सर्दी ऐसी पड़ेगा अकाल लेके आ गई. बताओ क्या करेगा भैया? This was caused by the eruption of Mount Tambora in 1815. The explosion shot so much ash and sulfur into the atmosphere that it dimmed the sun and triggered a global temperature drop. लो फिर ये ज्वालामुखी सही हुआ तुम्हारा. क्या कर सकते हैं? देखो उसका धुआं कितना खतरनाक होगा कि सूरज तक को ढांक देता. जो सूरज को ढांक दे कितना खतरनाक होना चाहिए. बताओ. Across Europe, North America, and parts of Asia, summer never arrived. Frost blanketed fields in June. Snow fell in July, and relentless rain drowned what little remained of struggling crops.
Famine spread as food supplies dwindled, sparking riots and mass migrations. किसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं यार? ऑटो वालों अब ये मतलब ये को चारों तरफ से मर पड़ी, एक तो चूल्हा ढक गया, फिर वो सर्दी पड़ी, बरसात हुई, यानी वो मार अपने को इधर से ले लो या उधर से ले लो, मार तो पड़ना ही पड़ना है। In China, floods destroyed rice crops, while in Europe, desperate people resorted to eating moss, sawdust, and even stray animals. 20th century. नहीं बोले तो जो हमारा जन्म है उनको तो खाना उतना तैयार हो गया आदमी बताओ ये अपने जमाने का नहीं। हाँ In 1918, the world was already reeling from the horrors of World War I when an even deadlier enemy arrived, the Spanish flu. This pandemic tore through military camps in entire countries, killing an estimated 50 million people. Meanwhile, the war's final year displaced millions, economies were shattered, and the brutal Red Terror in Russia was initiated by the Bolsheviks. But we need to mention other years of this century. The 1921 Soviet-Russia famine was another devastating tragedy caused by war, revolution, and drought, resulting in an estimated 5 million deaths. लो 5 मिलियन वो अनुमान भी है, मिलियन 5 मिलियन बताओ चाचा, ये 20वीं सदी तो मुझे सबसे खतरनाक लग रही है। Then in 1942, World War II reached one of its darkest moments. The Holocaust intensified with इसी सदी में दो विश्व युद्ध हो गए भैया, इसी सदी के अंदर बताओ। क्या होगा फिर? तो ये आप ये क्यों भूला, वो हिटलर ने भी तो लाखों लोगों को मार दिया। The Battle of Stalingrad became one of the bloodiest battles in history, and the global conflict raged on with key battles like Midway in the Pacific and El Alamein in Africa. Meanwhile, Japan's brutal occupation of Asia led to atrocities like the Sokching massacre. 21st century. यस सर, आपने क्या घटना तो बहुत सही हुई होंगी, लेकिन आप वो घटना बात जो बड़ी जो इतिहास में लिखे थे, ये तो घटना तो हुई होगी। अब ये 21वीं सदी आ गई अपनी, अब देखो इसमें क्या होता है। 2020 is considered the worst year of the current century so far, where the world was hit with a series of crises, all piling up on top of each other. The pandemic arrived, causing deaths, global lockdowns, forced quarantines, and a global economic downturn. Then there was the psychological strain of being separated from loved ones, curfews, and social isolation. Also, many businesses were destroyed by the lockdowns, pushing people into financial ruin. The same year saw wildfires ravaging regions like Australia, California, and the Amazon rainforest, burning millions of hectares and claiming lives while destroying vast portions of wildlife. Locust swarms in Africa and the Middle East swept through crops, causing widespread famine. Hurricanes and typhoons broke records, wreaking havoc across communities. Massive civil unrest spread worldwide, while the Beirut explosion leveled much of the city, adding to the year's immense suffering. अब 26 साल में इतनी महंगाई हो गई, अभी तो ये समझ लो कि 25 साल और पड़ा, 25 साल में और पड़ा है। अब 25 साल में और क्या हो, मतलब न जाने क्या होएगा। हाँ यार, मैं देख के ऐसा लग रहा होता है यार, ये वाकई में ये जो घटना है, चाहे इसको आपदाई बोल दो या इंसानी बोल दो, वाकई में बहुत बड़ी दुख की बात है। कहीं तो गुजरात ने मारा, तो कहीं ये राज्य शासन, वो फलाना शासन, ढींग का शासन, वहाँ का बादशाह, ये बादशाह इन्होंने मार दिया। इंसान को चैन किसी ने नहीं लेने दी, कभी ज्वालामुखी, कभी भूकंप, तो कभी सुनामी, कभी देखो हर तरह से नुकसान तो इंसान का हुआ है। तो इस बात पे मुझे इंसान ने इंसान को मारा, इस पे एक शेर याद आ रहा। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहां डूबी जहाँ पानी कम था। वही तो आदमी कुछ भी कर ले, इधर कर ले या उधर कर ले, मरना ही मरना है। और एंड में जाके क्या हुआ कि जब आदमी को खाना नहीं मिल रहा है, तो वो जानवर तक को खाने को तैयार, जबकि जानवर को अपन खा ही नहीं सकते। अब वो चेचक भी कितनी खतरनाक बीमारी, जिसने पूरे और मगर ये देखो, आपके सब बीमारियों का इलाज थोड़ा लेट आया, मगर आया जरूर।
मगर जब तक आया जब तक तो दुनिया लूट चुकी थी, दुनिया ही बेकार हो गई। मगर लोगों ने उसका इलाज ढूंढा। ढूंढा। कोरोना जब आया तो लोग कितने घबरा गए थे, अरे अब तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मगर धीरे धीरे करके जिसने भी बीमारी निकाली भगवान उसको खुश रखे और सुरक्षित रखे। मगर धीरे धीरे वैक्सीन नाम की चीज को निकाला, 2 डोज दिए अपन को। आज देख लो, जिसको भगवान ने नहीं चाहा था वो चलेगा, जिसको रखा वही अगर राम रखे तो वो वाली कहावत है, जिसको राम रखे उसे ये तो भाई जिंदा लोग और ये आज तक जिंदा। अब थोड़ी अंदर वाली बीमारियों से जूझ रहे हैं मगर जिंदा है, जिंदा है बस। अब ये क्या है कि मैंने वही बोले जब मैंने आपको बोला था नहीं क्या कुदरत में फिल्टर करती रहती है, तो वक्त तो मतलब मुझे इससे ये सीख मिलती है कि जब ये जो आबादी होती है कुछ हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो कुदरत या ये भूकंप ऐसी चीजें या बीमारी ऐसी चीजें आ जाती है तो उससे लाखों बीमार आबादी कम हो जाती है तो उससे मामला सही हो जाता है। अब उसको बीमारी कह लो या कुछ भी कह लो तो वो कुदरत की तरफ से आती है। वो अब आपकी भी इतनी जिंदगी हो गई, मेरी भी हो गई, मेरी 51 साल की जिंदगी है। अपन ने बीमारियों का नाम सुना था भाई, बुखार हुआ, मलेरिया हुआ या थोड़ी सी नजला जुकाम ये हुई, मगर आजकल तो कौन कौन सी बीमारियों के नाम सुना है अपन, कैंसर और फलाना और ढिमका और ये और जरा सा वो अपन चौराहे पे अच्छे भले बैठे जरा सा वो खांसे मालूम दे रही है कि वो खबर आ रही है कि भैया वो खांसते ही मर गए। ये सबसे बड़ी जिंदगी में तो ये लगेगा धर्म के नाम पे कितने लोग लड़ चुके हैं, मर चुके हैं और आज तक लड़ रहे हैं। और वो चला आ रहा आज तक, जबकि कोई भी चला, वो दुनिया को कहीं भी चले जाओ, अफगान चले जाओ, रूस चले जाओ, चाइना चले जाओ, किसी का भी चलो उसमें ये जगह नहीं कि तुम इस तरह लड़ो, लेकिन लोगों को ये नहीं कि चले जाओ। सही बात। तो चाचा ये वो जो है ना पावर और सत्ता का लालच है और कुछ भी नहीं। बस जिस आदमी को दे देखो मैं वो कहावत है ना कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, उसी की भैंस वाला काम चल रहा है। बाकी में सब ये वीडियो देख के बहुत अच्छा सबक दे के उठ रहे हैं और ये कहना चाहेंगे जो कुछ जितनी सर्दी जो लोग चाहे वो तूफान में मरे हो या वो कुदरती आपदा में मरे हो या आपसी जंग में मरे हो, वो सब जो मरे लोग उन सबको हम श्रद्धांजलि करते हैं और अभी माली से प्रार्थना करते हैं जो पहले हो गया वो हो गया। अब जो ये वक्त जो आ रहा है इसमें मालिक से मेरी हाजिरों की प्रार्थना है फिर कभी ऐसा वक्त ना आए फिर न कभी कोई इंसान की के साथ ऐसा खिलवा करे। और इसी के साथ जो जानकारी आपको दे इसी जानकारी के बाद इसकी जानकारी के साथ फिर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। जब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका नमस्कार और धन्यवाद।